So welcome back to my channel, and in this video I am telling you how was my January so far. So बहुत कुछ इंटरेस्टिंग किया है मैंने इस महीने, तो चलो शुरू करते हैं. Firstly, I am giving a life to my character which was in my mind for like so many days, and I wanted to like sketch it out and do something about it. तो मैंने उसे कॉपी में ड्रॉ किया था, एंड आई थॉट टू रीडिज़ाइन इट ऑन माई आईपैड एंड टू just add character to it, like color and what all I want in it. So yeah, आप लोग ये ऊपर छोड़ती हूँ मैं कि you want this guide to be in drawings or you want me to make a figure with clay. So मुझे comments में ज़रूर बताना. And here is all the details I have wrote कि कैसा दिखना चाहिए, क्या colors होने चाहिए. I am confused like on some things, but we'll figure it out together. So मुझे आप comments में ज़रूर बताना and कैसा लगा वो भी. मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एक स्टोरेज बॉक्स बनाया था, और आप लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो स्लो वर्जन में लेके आओ. सो हियर आई एम विद दैट, बट आई हैव मेड दिस बॉक्स विथ वेस्ट पेपर. लाइक मैंने अपने पुराने नोट्स को यूज़ करके ये बॉक्सेस बना के स्पेयर में रखे हैं, क्योंकि इट्स अ ग्रेट वे टू स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, and I use it as like whenever I'm crafting and I want to dump or just add things which I don't need anymore, like waste. So मैं जो भी वेस्ट चीज़ें होती हैं वो उस बॉक्स में डंप कर देती हूँ, एंड एट द एंड आफ्टर ऑल ऑफ माई प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन डन, उस बॉक्स को मुश कर दो एंड जस्ट थ्रो इट आउट, बिकॉज ऑलरेडी वो वेस्ट पेपर से बना हुआ है, एंड इट्स अ ग्रेट वे टू यूज़ वेस्ट पेपर, एंड इट्स लाइक अ वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट बट अ स्मार्टर वे. सो या, दैट्स हाउ आई यूज़ इट. बट आप इसे कुछ भी स्टोर करने के लिए बना सकते हो, एंड हियर इज़ द स्लो ट्यूटोरियल ऑफ इट, and I hope it was helpful for you guys. It's just few easy folds, इतना कुछ इसमें है नहीं, and it's very easy and you can make it and store a lot of things in it. आप इसे बड़ा छोटा कोई भी साइज में बना सकते हो and कैसे भी रख सकते हो. You can tape it out and make a square box, whichever you like. So मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलना या आपको हेल्पफुल रहा या नहीं. एंड आप देख सकते हो मैंने इसे नोट्स से ही बनाया है, लाइक फ्रॉम द वेस्ट पेपर, एंड आई लव दिस. सो या, दैट वाज इट फॉर दिस. सो बहुत दिनों से मेरे घर में काम चल रहा है, एंड मेरे घर का टीवी यूनिट पूरा रिनोवेट हो रहा है विथ माय रूम का डोर. सो आप देख सकते हो ऑल द प्रोसेस एंड हाउ इट टर्न्ड आउट. Oh my god, it is looking so beautiful, and you guys also tell कि कैसा रहा, because I did the interior of it. And yeah, the next day I went to Mr. DIY and I found this folder, like a file folder, which is just for 270. and इस folder के अंदर compartments है और you can say pockets है. Firstly, it's such a sweet candy pink color and I love it, and it has a pop of dark pink. It's very aesthetic and I love it. So firstly, let me show you. इसके अंदर बहुत सारे compartments और pockets हैं, जो भी आप बोल सकते हो. And wait, I'll show you a clear picture of how it is looking. सो या, इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है और मैंने इसे स्टोर करने के लिए ख़रीदा है, लाइक ऑल माई क्राफ्ट पेपर्स, लाइक द कलर पेपर्स.
सो मैं आपको दिखाती हूँ. सो दीज आर ऑल माई कलर पेपर्स जो एक पैकेट में आते हैं, लाइक द क्राफ्ट पेपर जो A4 साइज़ के होते हैं एंड द स्मॉलर वंस ऑल्सो. तो ये ऐसे एक पैकेट में आते हैं एंड इट इज़ सो टफ बार बार उसे निकालना फिर उसमें डालना. एंड कई बार तो ऐसा भी होता है कि आई मिस आउट सम कलर्स. सो आई वॉन्टेड टू सेग्रीगेट देम कलर बाय कलर. एंड आप इसे अपने डॉक्यूमेंट्स पेपर्स कुछ भी स्टोर करने के लिए यूज़ करते हो एंड इट्स अ वेरी ग्रेट प्रोडक्ट. सो या, let's segregate all my papers and yeah, and I'll show you how pretty it's looking and it's so easy to access it now. Like just nikalo dhalo and you are done and good to go. And you can also label them. जैसा कि आप देख सकते हो, each compartment slash pocket has a label on it. सो आप उन्हें लेबल भी कर सकते हो कलर वाइज एंड इट्स सो क्यूट. सो या, दैट वाज दैट फॉर द शॉपिंग. सो जैसा कि आपको पता है मेरे घर रिनोवेशन हुआ और प्लाई बहुत सारी बच गई थी, तो मैंने आर्टिस्ट का दिमाग लगाया और कुछ भी चीज़ वेस्ट होने नहीं दिया है. सो मैं उसे अपने क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स के लिए कैनवास में कन्वर्ट कर ली हूँ. देयर इज़ सम स्नीक पीक एंड मेनी मोर थिंग्स. सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज ये साल बहुत क्रिएटिव होने वाला है. एंड आई वेंट ऑन अ कॉफ़ी डेट विथ माई सिस्टर एंड हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड या, एंड लास्टली आई एम शेयरिंग दैट there is a very big news for me where I am showing you my YouTube ka dashboard and also my planner where I planned that every Saturday my video will be up live. And last year my target was 2k till August, but unfortunately I couldn't complete it and it completed on December before 31st because I was inconsistent, so इसलिए delay हो गया था. So I set a target on 31st December 2024 to achieve 2k, but it happened before. So I am very grateful for that. But then I started posting consistently, and last week there was no long video. There was no time for me to shoot one, and I'm really sorry about that because there was a lot of things going on in my house. So that's why I couldn't post anything last week, but I did post a short video. And so this year my new year resolution was to be consistent and achieve 5k till mid of this year, which is June. But you guys, January is also not completed yet, and I'm also like so shook. Like almost I am hitting the target of 5k. I am near it. As you can see, my current subscriber is 4190, which is showing on your screen. And I am also so grateful that I will complete my resolution before time, and this is all because of you guys, and I am so grateful. So we will set a new target till mid of June this year, which will be crossing 10k till June. And I am so happy to share with you guys this thing. And मुझे पूरा भरोसा है कि ये भी हम कर लेंगे with your support. थैंक यू सो मच. एंड ये था माई जनवरी सो फार. एंड आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. So let's see you in the next video. तब तक के लिए bye bye.